गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हेग सर्विस कन्वेंशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क के कोर्ट को बताया है कि यूएस ने जो है इंडिया के असिस्टेंस मांगी है हेग सर्विस कन्वेंशन के अंडर जो है समन्स देने के लिए गौतम अदानी और सागर अदानी को। अदानी इसके ऊपर कुछ क्रिमिनल और सिविल चार्जेस लगाए गए हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एसईसी द्वारा रिगार्डिंग सम ब्राइब जो इंडियन ऑफिशियल्स को पे की गई है। तो अब एसईसी ने न्यूयॉर्क कोर्ट को बताया कि आर्टिकल 5A जो है हेग सर्विस कन्वेंशन का वो इन्वोक करके उन्होंने इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को समन्स डिलीवरी करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो एजेंसी जो है वो अल्टरनेटिव सर्विस मेथड्स भी जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। तो अभी हुआ क्या था कि फरवरी में ही इसी मंथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टेम्परली सस्पेंड कर दी थी इन्फोर्समेंट फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट की 180 डेज़ के लिए, जो कि आपके यूएस एंटिटीज़ या इंडिविजुअल्स को फॉरेन ऑफिशियल्स को ब्राइब देने से जो है प्रोहिबिट करता है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में रेट्रो एक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, मतलब जो पुराने केसेस चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। तो एनीवेज हम देखते हैं हेग सर्विस कन्वेंशन है क्या। 1965 में साइन किया गया था क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि समन्स जो होते हैं उसके लिए इसको साइन किया गया था मेंबर कंट्रीज़ द्वारा। इंडिया इसका 2006 में मेंबर बना है। इसका एम ये रहता है कि जो डिफेंडेंट्स हैं फॉरेन जुरिस्डिक्शंस में उन्हें टाइमली या एक्चुअल नोटिस जो है लीगल प्रोसीडिंग्स का वो समय से मिल सके। कन्वेंशन जो है सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब सेंडिंग और रिसीविंग कंट्रीज़ दोनों ही इस कन्वेंशन की सिग्नेटरी हैं। करंटली 84 स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया और यूएस जो है वो इसकी पार्टीज़ हैं। कन्वेंशन अलाउ करता है सर्विस थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, चाहे वो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू हो बिटवीन जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया था नवंबर 2006 में। इंडिया मैंडेट करता है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मतलब एमईए के थ्रू ही जो है वो सर्व हों। और ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी जुडिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर चैनल्स के थ्रू नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि यूएस की कॉन्सुलेट या यूएस की जो है एम्बेसी जो है वो डायरेक्टली समन्स जो है वो एक इंडियन इंडिविजुअल को भेज सके। ठीक है। जितनी भी रिक्वेस्ट हैं सब इंग्लिश में होनी चाहिए या फिर एक इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए उसकी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो इंडिया की डेजिग्नेटेड सेंट्रल अथॉरिटी है ऐसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास ये भी पावर है कि वो ऐसे रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन कुछ रीज़न बताना पड़ेगा, जैसे कि अगर सोवरेनिटी का कंसर्न है या सिक्योरिटी का कंसर्न है। ठीक है। सो अब डिफ़ॉल्ट जजमेंट भी आ सकती है हेग कन्वेंशन के अंडर। मतलब डिफ़ॉल्ट जजमेंट मतलब कि अगर फॉरेन गवर्नमेंट जो है कोऑपरेट ही नहीं कर रही, समझ लो इंडिया जो है वो समन्स देने को मना ही कर दे, तो जो है डिफ़ॉल्ट जजमेंट जो है वो इशू कर सकता है न्यूयॉर्क का कोर्ट। ठीक है, कि हम तो जो है उनको समन ही नहीं दे पा रहे हैं। अब इसमें आर्टिकल 15 के कुछ कंडीशन स्पेसिफिक जो है वो फुलफिल होनी चाहिए तभी डिफ़ॉल्ट जजमेंट आती है। जैसे समन्स जो है वो कम से कम जो है समन्स जो है वो ट्रांसमिट हो चुके होने चाहिए एक अप्रूव्ड कन्वेंशन मेथड के थ्रू। कम से कम 6 महीने हो चुके होने चाहिए समन भेजे हुए उस कंट्री को। कोई भी सर्टिफिकेट सर्विस जो है वो रिसीव ना हुआ हो उस कंट्री से या उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से, तो जो है वो डिफ़ॉल्ट जजमेंट जो है वो दी जा सकती है। इंडिया ने कहा है, इंडिया एक्सप्लिसिटली स्टेट करता है कि इंडिया के कोर्ट्स जो है वो डिफ़ॉल्ट जजमेंट देंगे क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स में अगर कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस जो है वो रिसीव नहीं होता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स आर्टिकल 15 की कंडीशंस तो फुलफिल करनी ही होती हैं। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं की मैरीटाइम इनिशिएटिव्स अनाउंस्ड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स जो है उन्होंने कुछ मेजर इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं इंडिया के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। जैसे कि आपका है वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, जो कि स्टैंडर्डाइज करेगा पोर्ट ऑपरेशंस को क्रॉस इंडिया की मेजर पोर्ट्स, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रीमलाइनिंग करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। फिर है सागर आंकलन एलपीपीआई, लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि पोर्ट परफॉर्मेंस को असेस करेगा, इम्प्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब इसमें क्या की मैट्रिक्स हैं, कार्गो हैंडलिंग, टर्न अराउंड टाइम, बर्थ हाइडल टाइम, शिप बर्थ डे आउटपुट। ठीक है। वैसे ही भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम, ये जो है इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ाने के लिए आईपीजीएल, एसडीसीएल और आईपीआरसीएल का कंसोर्टियम बनाया जा रहा है। ठीक है। फिर है मैत्री, जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा ट्रेड प्रोसेसेस को, रिड्यूस करेगा ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को और इम्प्रूव करेगा एफिशिएंसी थ्रू एआई और ब्लॉकचेन। ओके। एक वेबसाइट भी बनाई गई है न्यू, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए।
इंडिया जो है वो इंडिया मैरीटाइम वीक भी होस्ट करने वाला है अक्टूबर में इसी साल मुंबई में, जिसमें इंडिया अपने मैरीटाइम विरासत और मैरीटाइम विकास को जो है हाईलाइट करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है अनाउंस किया जा रहा है इंडियन शिपयार्ड्स के लिए, ताकि जो है इंडिया अपनी ब्लू इकोनॉमी के विजन विजन को जो है वो रियलाइज़ कर सके, जिससे कि जो कि वाइटल है जॉब्स के लिए, ट्रेड के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और इंडिया एक टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशन में भी बनना चाहता है बाय 2030। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो अब रीअसेसमेंट नोटिस जो हैं वो भेज सकेंगी अंडर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स अंडर द न्यू प्रपोजल जो इनकम टैक्स बिल में है 2025 के। तो ये गार है क्या, एक एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉ है इंडिया का, जो कि कर्ब करता है टैक्स इवेजन को और अवॉइड करता है टैक्स लीक्स को। ठीक है, ये इफेक्ट में आया 2017 में अप्रैल में, और ये स्पेसिफिकली एम्ड है रेवेन्यू लॉसेस को कट करने के लिए, और एग्रेसिव जो टैक्स अवॉइडेंस मेजर्स लेती हैं कंपनीज, उसमें जो उसके थ्रू जो रेवेन्यू लॉसेस होते हैं गवर्नमेंट को, उसको कट करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इस अंडर करंट रूल्स रीअसेसमेंट नोटिस जो है वो भेजे जा सकते हैं अगर अंडर रिपोर्टेड इनकम है 50 लाख या उससे ज़्यादा की। ये नोटिस 5 साल और 3 महीने तक भेजे जा सकते हैं। गार प्रोविजंस जो है वो वाइडर पावर्स देते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ को, कि वो किसी भी अरेंजमेंट या ट्रांजैक्शन को अवॉइडेंस अरेंजमेंट के अंदर जो है वो इम्परमिसिबल कर डिक्लेयर करे। ठीक है, और रिकम्प्यूट करे इनकम और उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली 20th एनिवर्सरी जो है वो मार्क की है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल पर। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो नेगोशिएट हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। मई 2003 में इसको अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा। 181 पार्टीज़ जो है इसकी कन्वेंशन की मेंबर है। इसको डेवलप किया गया है कंट्रीज़ द्वारा एज इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ टोबैको एपिडेमिक, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 2004 में। और इसमें कई तरह के मेजर्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं डिमांड और सप्लाई ऑफ टोबैको को रिड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट जो है उन्होंने नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को जो है वो लिफ्ट ऑफ किया है। तो ये इनिशिएटिव जो है ये भेजा गया है नासा द्वारा ताकि फाइंड और मैप किया जा सके वाटर को ऑन मून सरफेस। ये लगभग एक डिश वॉशर साइज़ जो है वो ये स्पेसक्राफ्ट है, जिसका सिर्फ 200 किलो वेट है, और ये शेड्यूल्ड है परफॉर्म करने के लिए सीरीज़ ऑफ मून फ्लाई बाइज। और ये ऑर्बिट करेगा ऑल्टीट्यूड ऑफ रफली 100 किलोमीटर्स और कलेक्ट करेगा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ टारगेटेड एरियाज। और इसको बनाया किसने, लॉकहीड मार्टिन के स्पेस डिवीजन ने। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लड मून। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टोटल लूनर इक्लिप्स आ रहा है 14 मई मार्च को, जो कि विजिबल होगा मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ऑफ कोर्स इंडिया में विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ब्लड मून जो है वो अर्थ का जब ये तब होता है जब अर्थ का मून जो है वो टोटल लूनर इक्लिप्स में होता है, और अर्थ जो है वो डायरेक्टली सन और मून के बीच में आ जाती है। तो ये होता है जब तब है ब्लड मून का कंसेप्ट, जब जो शॉर्टर वेवलेंथ लाइट होती है ब्लू लाइट वो स्कैटर होती है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ या रेड लाइट होती है वो पास होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू, जिसकी वजह से जो है मून हमें रेड लगने लगता है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या लाइट पॉल्यूशन, उससे जो है मून ज़्यादा रेड, ऑरेंज या कॉपर कलर्ड लगने लगता है। ओके, तो टोटल लूनर एक्लिप्स जो है वो हर 3 साल में एक बार आता है, जैसे लास्ट जो है वो 2022 में आया था, अब इस बार हो रहा है 2025 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया है सभी स्टेट्स को कि वो कंसर्न्स जो हैं रिलेटेड पीरियोडिक स्टॉक आउट्स या क्वालिटी या सर्टिफिकेशन जो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ड्रग्स का, जो कि HIV पेशेंट्स के लिए होते हैं, उस पर रिस्पॉन्स दें। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या होती है, एक कॉम्बिनेशन है मेडिकेशंस का जो ट्रीट करता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को। ये वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है CD4 सेल्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का। ऑफ कोर्स ये थेरेपी से हम HIV को क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट से जो है जो लोग HIV में जी रहे हैं उनको
हेल्दी लाइफ जीने का जो है एक अवसर मिलता है, और रिड्यूस भी हो जाता है उनका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो उनकी बॉडी में एचआईवी तो रहता है, लेकिन CD4 सेल्स एडिशनल बनते हैं जो कि उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ठीक है। एचआईवी मेडिसिन जो है वो रिड्यूस भी करती है रिस्क ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन। तो बेसिकली गोल होता है इस ट्रीटमेंट का कि वायरल लोड बॉडी में कम करना, ठीक है। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन जब दी जाती हैं तो ये ज़्यादा ट्रीटमेंट में इफेक्टिव होती हैं रादर देन जस्ट एक सिंपल सिंगल मेडिसिन दी जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स की ओल्ड गाइडलाइंस को जो है वो चेंज किया जाए और उनको मोर रेलिवेंट बनाया जाए करंट सिनेरियो में, ताकि जो है क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टेचुटरी बॉडी है, 1962 में इसको सेटअप किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंडर। तो इसको जो है वो लेट श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडले के जो है वो लीडरशिप में जो है स्टार्ट किया गया था, ताकि एनिमल वेलफेयर जो है वो जनरली हो सके और एनिमल्स को जो है वो अननेसेसरी पेन और सफरिंग से बचाया जा सके। बल्लभगढ़ हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ये एडवाइस करता है क्रुएलिटी को रोकने को एनिमल्स पर। स्टेट ऑफ कोर्स खुद के पास इसके कोई पीनल पावर्स तो नहीं होती, बट ये स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो रिकमेंड कर देते हैं कि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए अगेंस्ट ऑफेंडर्स। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है ये एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को। इसका जो बोर्ड है उसमें 28 मेंबर्स होते हैं, और इन मेंबर्स का जो पीरियड ऑफ जो है वो ऑफिस या टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो 3 साल का होता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Hague Service Convention. This topic is important for your international relations. So US Securities and Exchange Commission has informed a New York court that it has sought Indian government's assistance under the Hague Service Convention to serve summons on Gautam Adani and Sagar Adani. So the Adanis are facing criminal and civil charges from the US Department of Justice and the SEC for allegedly bribing Indian officials to advance Adani Group's solar projects. So, SEC has informed a New York court that it has invoked Article 5A of the Hague Service Convention, and it has requested India's Ministry of Law and Justice to facilitate summons delivery to Gautam and Sagar Adani. The agency is also considering alternative service methods. Uh, but what has happened this month is that Trump administration has temporarily suspended the enforcement of Foreign Corrupt Practices Act for 180 days, under which Adani Group has been, or the Gautam Adani and Sagar Adani are being investigated. So, FCPA prohibits US entities and individuals from bribing foreign officials for business gains. So, this executive order has mandated a review of ongoing FCPA cases, but the SEC's court filing suggests that uh, pause does not apply retroactively. Okay, so this would allow the Adani investigations to proceed. So, what is the Hague Service Convention? So, it was signed in 1965, which facilitates cross border exchange of legal documents, including summons, in commercial cases. India is also a party to this since 2006. So, it aims to ensure defendants in foreign jurisdictions receive timely and actual notice of legal proceedings. So, this convention applies only when both the sending and receiving countries are signatories. So, currently, 84 states, including India and US, are parties. Convention allows service through diplomatic channels, postal services, and direct communication between the judicial officers or legal representatives. India mandates that the legal documents in cross-border commercial cases must be served indirectly through a designated authority like MEA, but of course in India's case it is the Ministry of Law and Justice. So it prohibits the service of judicial documents through diplomatic or consular channels, which means that the US embassy or US consulate cannot directly serve the summons to Gautam Adani or Sagar Adani, or for that matter any other individual in India. So all service requests must be in English, or they should include an English translation. Ministry of Law and Justice serves as India's designated central authority, and it has the power to reject a request, but it must provide certain reasons regarding like the concerns over sovereignty or security. Okay.
So there is also default judgment. What is default judgment? It can be issued if a foreign government does not cooperate. So, for example, if Indian government denies to cooperate in this case, then the New York court can give a default judgment that despite all our efforts, the summons were not being delivered, and the Indian government is not cooperating. So, a default judgment can be issued. Okay, but for that, Article 15 of the convention sets out specific conditions. For example, the summons must have been transmitted through an approved convention method. At least 6 months must have passed since transmission of those summons. No certificate of service has been received despite reasonable efforts from the other country's competent authorities. So in India, we have a position that our courts can issue a default judgment in cross-border disputes even if no certificate of service is received, provided of course the other conditions of Article 15 are met. So the next topic is key maritime initiatives announced. This topic is important for your economy section and also your governance section. So Union Minister of Ports has announced major initiatives under Ministry of Ports to modernize India's maritime infrastructure. First is the One Nation One Port process, which is meant to standardize port operations across India's major ports. The ministry has also streamlined documentation, cutting container operation documents by 33% and bulk cargo documents by 29%. Then we have the Sagar Ankalan LPPI, or the Logistics Port Performance Index, which is meant to assess port performance and improve operational efficiency. It would evaluate key metrics like cargo handling, turnaround time, berth idle time, and ship berth day output. Okay. We also have this Bharat Global Ports Consortium, which was launched to boost India's maritime trade by integrating IPGL, SDCL, and IPRCL. We have this MET3, that is this digital transformation in trade, to streamline trade processes, reduce bureaucratic delays, and improve efficiency through AI and blockchain. A new website has also been made for National Center for Excellence in Green Port and Shipping. India will also be hosting the India Maritime Week in October in Mumbai, which will highlight India's maritime virasat and maritime vikas. Discussions are also focusing on financial support for the Indian shipyards, so that we can become a top 10 shipbuilding nation by 2030. So India is having a blue economy vision, which is vital for jobs, trade, sustainability, and economic growth. So the next topic is general anti-avoidance rules. This topic is important for your uh, governance section. So income tax authorities may now be able to issue reassessment notices under the GAR, under the new proposal which has been given under the Income Tax Bill 2025. So what is GAR? It is an anti-tax avoidance law in India, which is meant to curb tax avoidance and avoid tax leaks. It came into effect in 2017. It is specifically aimed at cutting revenue losses and um, uh, that happens to the government due to aggressive tax avoidance measures which are taken by the companies. So under current rules, reassessment notice where the underreported income is more than 50 lakhs can be issued within 5 years and 3 months from the end of the assessment year. GAR provisions give wide powers to tax authorities to treat any arrangement or a transaction as an impermissible avoidance arrangement. Okay. So the next topic is WHO Framework Convention on Tobacco Control. This topic is important for your international relations and social issues. So recently, World Health Organization has celebrated the 20th anniversary of the Framework Convention on Tobacco Control. It is the first international treaty negotiated under the auspices of World Health Organization. It was adopted by the World Health Assembly in 2003. So currently there are 181 parties to this convention. It was developed by countries in response to the globalization of the tobacco epidemic. India ratified this convention in 2004, and the convention provides for various measures to reduce the demand as well as supply of tobacco. Okay. So the next topic is Lunar Trailblazer Orbiter. This topic is important for your science and tech section. Recently, a SpaceX Falcon 9 rocket lifted off from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral.
carrying NASA's Lunar Trailblazer orbiter. So, Lunar Trailblazer spacecraft is being sent to find and map water on the moon's surface. It is about the size of a dishwasher, and it relies on relatively small propulsion system. It weighs just about 200 kgs, and it is scheduled to perform a series of moon flybys and looping orbits over a span of several months to position itself to map the surface in detail. So it eventually will orbit at an altitude of roughly 100 kilometers, and it will collect high resolution images of targeted areas, and it has been built by the Lockheed Martin's space division. Okay, so the next topic is blood moon. This topic is important for your science and tech section. So a total lunar eclipse is going to occur on March 14th, and it will be visible in most parts of the world. And this will be a blood moon, of course. So blood moon occurs when Earth's moon is in total lunar eclipse phase. So blood moon occurs when Earth comes directly between the sun and the moon. What happens is that the shorter wavelength light, that is the blue light, gets scattered, while the longer wavelength light, that is the red light, passes through the Earth's atmosphere, making the moon appear red. So depending upon external factors also, like atmospheric conditions and light pollution, the moon during a blood moon phase may appear red, orange, or copper colored. Okay. So this total lunar eclipse marks its return after nearly 3 years. The last one occurred in 2022. So the next topic is antiretroviral therapy. This topic is important for your social issues. So Supreme Court has recently directed all states to respond to the concerns relating to periodic stockouts, transparency in tendering and procurement, and drug quality and certification processes of the antiretroviral therapy meant for people living with HIV. So ART is a combination of medications which are used to treat HIV. HIV is a virus that destroys the CD4 cells, that is the T cells, which are important part of the immune system. While this therapy cannot cure HIV, but this prompt HIV treatment can help all people with HIV live long, healthy lives and reduce the risk of HIV transmission. So, although there may still be HIV in the body, but these cells, the T cells, can keep the immune system strong enough to fight off infections. So, by reducing the amount of HIV in the body, these medicines can reduce the risk of transmission as well. One of the main goals of this treatment is to reduce a person's viral load to an undetectable level. Okay, so taking a combination of medicines is good rather than just one, which makes the treatment more effective. So the next topic is Animal Welfare Board of India. This topic is important for your environment section. So central government is planning to change the Animal Welfare Board's old guidelines to make them more relevant in the current scenario, so as to prevent cruelty towards animals. So this Animal Welfare Board of India is a statutory body which was set up in 1962 in accordance with the Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960. So it was started under the stewardship of Srimati Rukmini Devi Arundale, a well-known humanitarian. So the mandate of the board is to promote animal welfare in general and protect animals from being subjected to unnecessary pain or suffering. Its headquarters is located in Ballabgarh, that is in Haryana, and it advises state and central governments on the issues related to animal welfare, including cruelty meted out to animals. So it does not have penal powers on its own, but it can recommend state authorities to initiate appropriate actions against the offenders. This board also gives financial assistance and other assistance to animal welfare organizations functioning in any local area. Okay, or even for imparting education in related to human treatment of animals and so on. The membership of this board consists of 28 members, and the term of office of these members is for a period of 3 years. Okay. So several government organizations, along with animal rights activists and parliamentarians, are represented on this board. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.